Joining us on the broadcast. I'm also joined by Dhanraj Vanjari, former ACP of the Mumbai Police. Mr. Vanjari, thank you for joining us on the broadcast on CNN News 18. Your first reaction to this development, that the ATS will now have a legal representative during the trials, that's what's coming in from Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil. It is actually, this is the prerogative of Maharashtra government to have a legal representative, because the original basic investigating agency is ATS in this matter, and ATS have all right to do. The question comes in a two-way. When I spoke to some of my officers, they said that this type of legal intervention, Maharashtra government should have done at a very early stage. So far, whosoever witnesses has gone hostile, they could not have. Vanjari, please stay with us. Now let's listen into what Dilip Walse Patil told my colleague Vinaya Deshpande when it comes to this big twist emerging in the Malegaon blast case. मालेगांव प्रोब अब वापस न्यूज़ में आ गया है, जब से वापस एक इंसान ने ये कहा है कि जो ATS हैं उनके प्रोब के दरमियान उस पर काफ़ी प्रेशर डाला गया कि वो झूठे नाम ले, योगी आदित्यनाथ का भी नाम ले। तो अब कांग्रेस के ही एक लीडर ने ATS चीफ को खत लिखकर ये कहा है कि ये साजिश है ATS को और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए। क्या आप उस तरीके से उसको देखते हैं? अभी मुझे इसमें एक बहुत आश्चर्य की बात है कि अभी तक 16 विटनेस जो है वो हॉस्टाइल हो गए। अभी अगर NIA के पास इसकी इंक्वायरी है और NIA इंक्वायरी करती है और ढंग से इंक्वायरी होती है, तो जो सही आरोपी है वो सामने ज़रूर आएंगे। लेकिन हमारे जो एक सहकारी, उन्होंने ATS चीफ से मिलकर यही कहा है कि इसके बारे में महाराष्ट्र ATS ने भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपना वकील देना चाहिए, और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, हम हमारा वकील देंगे। आप कह रहे हैं कि ATS की तरफ से भी वकील वहाँ पे अब मौजूद रहेगा? हाँ, मौजूद रहेगा। और सर, क्या NIA के रोल पे आपको अचरज लगता है, क्योंकि उस पे भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं? हम तो NIA से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कोई केस में ऐसा एकदम ही होता है तो अभी मालूम नहीं इसके पीछे क्या है, तो महाराष्ट्र पुलिस को रॉन्ग बॉक्स में डालना है या कुछ है, लेकिन मैं ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन अभी हम अपनी कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर प्रेशर डालना वगैरह ये सब बातें सही नहीं है। आप NIA से बात करेंगे? राज्य सरकार क्या NIA को इस मामले में, क्योंकि अब सिर्फ ATS की बात नहीं है, NIA पे भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आप गृह मंत्री के तौर पे NIA से बात करेंगे? हाँ, हमारे SS होम को बात करेंगे उनसे, या तो पुलिस कमिश्नर बात करेंगे और उसमें हमारा जो कहना है वो उनको बता देंगे। The question here, second question comes that when NIA took the investigation, what NIA has done? Does NIA found any different circumstantial evidence? Does NIA procure some forensic scientific truth different than what ATS has? So far, as per my knowledge, it is not done. So what NIA has done, NIA has recorded the statement of the pre-recorded witnesses again. And when such statements have been recorded, it's a natural phenomena. There must be some or other disparity with what earlier deposition, earlier statement they have given to ATS. If they are harping on this disparity, there is difference between what this witness says at that time, and there is difference between what this witness is saying now to NIA. And if this kind of disparity is being brought to the knowledge of the court, it is the prerogative, it becomes a prerogative of judiciary to testify the witness. And if witness is not coming true, or either on the side or got confused with the facts, earlier he deposed and now he deposed with NIA. So naturally, as a legal process and phenomena, he is being turned hostile. If this will go on, the case will land in acquittal. Already this blast case investigated by ATS, there was an earlier theory, Aitachan theory, where 9 Muslims were arrested and they got acquittal from the court. So in this case also there is a possibility
that if these kind of witnesses are going hostile, this accused may end into acquittal. Now Right. the question is Maharashtra government's move and the move taken by Honorable Home Minister should be appreciated. That there I durust hai, whatever it is, whenever he decided to intervene legally in the court of law, I think that move on the part of Home Minister need to be welcomed. Right. Mr. Vanjari, please stay with us now.